Hello and welcome to this class, and we are meeting after a long time. I don't know about you, but I did miss you guys a lot. So CLAT Consortium has released its sample paper 2. If you have registered for CLAT already, you'll find it in your dashboard, and hopefully you also downloaded the PDF and solved the questions. So what does the GK portion tell us from that sample paper? We'll try and understand in this video. Okay, so my name is Pawan and I am from Dehradun, and hopefully you'll be seeing me more of me after this video. Now, first of all, something that has been bugging all of us, the quarantine. I hope you have, you already know, of course, that the government has taken 21 days lockdown, quarantine कर दिया है सब लोगों को. So it's a bit depressing, especially for students, for aspirants your age. When I was 17 or 18, I hardly stayed at one place for a few hours, leave alone 21 days. So I understand this must be difficult for you, but well, when life gives you lemons, make lemonade. Uh, I have here 4 5 things that you can do in the next 21 days, and I'm telling you, these next 21 days will decide how you fare in the exam, whether you crack the top NLUs or whether you come out of these 21 days like let us say Mr. Omar Abdullah with a long beard, or maybe some sort of a depression. That depends on you. First of all, have a schedule for studies, for leisure, and follow it. And by schedule, I mean ration your time. Your time is the most important resource right now. So maybe you should write it something down on the paper. कि मैं सुबह 6 बजे उठूंगा, I'll wake up at 6 a.m. Then at by 8 a.m. or 9 a.m. I'll be done with my breakfast and my exercise, and get ready for have some, put on some clothes and something and get ready for studying. So fix maybe 3 4 hours, maybe 5 hours of study. Do not, however, overlook exercise, fun and family time. That is important to maintain your sanity. क्योंकि अगर आप एक्सरसाइज नहीं करोगे, अगर आप फैमिली के साथ में बात नहीं करोगे, अगर आप अपनी हॉबीज को फॉलो नहीं करोगे, इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू ये 21 दिन गुजारना आपका भारी हो जाएगा. Anyways, I am going to give you a contrarian advice here, but this is very important, okay? Because the news is full of negative things, and if you can do it, and I'll suggest you do it, do not read any news, do not listen to any news channels, because right now in news there is more noise than information. There is only one topic going on, and that is of course COVID-19. और अगर आप बार बार उसको पढ़ते रहोगे, that will weigh on your minds again and again. Ignore that, okay? Although मैं जीके का टीचर हूँ, right now I am making this video for general knowledge, for current affairs, but do not read any news. Anything worthwhile you will find in the compilations, okay? Do not read any news. Just revise what you know. Lastly, lastly, learn to forgive yourselves. There may be days, maybe किसी दिन आप नहीं पढ़ पाएंगे, किसी दिन आपका मन नहीं करेगा पढ़ने का, किसी दिन आपको लगेगा कि यार बहुत लो फील कर रहे हैं. बट एवरीबडी मेक्स मिस्टेक्स, एवरीबडी हैज बीन लेजी एट सम पॉइंट ऑफ टाइम इन हर लाइफ. सो लर्न टू फॉरगिव योरसेल्व्स, एंड दिस इज अ लाइफ लॉन्ग लर्निंग यू शुड हैव. सीखिए अपने आप को माफ करना, और जब कोई गलती करते हैं, नेक्स्ट टाइम वो गलती मत कीजिए. डोंट बीट योर सेल्फ ओवर इट, क्योंकि होता क्या है, वो गिल्ट ट्रिप जो है ना, वो आपको बहुत लंबे टाइम तक परेशान करेगा. एक दिन नहीं पढ़ा, अगले दिन गिल्ट की वजह से नहीं पढ़ोगे. डोंट हैव एनी गिल्ट. एवरीवन मेक्स मिस्टेक्स, ओके? And if possible, read a book a week. You can follow the CLAT's reading list. If you don't know what is the reading list, just contact me. I'll give you the PDFs also of the books. और उनको आप पढ़ सकते हो. जो भी आपको एक वीक में एक बुक आप अगर पढ़ें तो काफी अच्छी स्पीड आपकी हो जाएगी, आपकी वोकैबुलरी भी उससे एक्सपैंड होगी. Okay, now you know that already, but before we discuss anything, let's discuss the question types. Okay, जो CLAT Consortium ने बोला है, there will be 4 types of questions in CLAT 2020 current affairs section, which also includes GK.
So one will be current affairs of national and international importance. So everything actually comes under this, but these are only important things, right? You don't have to read like in some little city somebody did something. You don't have to read that. Only important things. Secondly, art and culture. And you'll see in sample paper also they have given a question about art and culture, which is I think the most difficult question in the whole GK section. इंटरनेशनल अफेयर्स से बहुत सारे क्वेश्चन आने वाले हैं, करंट अफेयर्स जो सॉरी सैंपल पेपर में भी उस पर जोर दिया गया है, वो आपको कवर करना है. एंड लास्टली historical events of continuing significance. What that means is historical events that continue to impact us even today. And I'll tell these things, I'll give you examples कि किस तरीके से हम बात कर रहे हैं कि आपको पढ़ाई करनी है. सो हाउ टू अप्रोच, एक्चुअली इफ यू रीड द LMS फॉर द लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, so called learning management system, the CLAT consortium has put on the website. Do read it. I mean, it's reading practice, but I have tried to simplify things here. बहुत सारी चीजें उसमें वर्बोस तरीके से दे रखी हैं, बहुत ज़्यादा दे रखा है. I have tried to be brief but give examples. So first thing, how to approach this paper, and this is most of this you will find in that LMS, but I have simplified it, I have explained it, and in fact in some places I have given just the opposite advice because that is more practical. First of all, it is intended to test your depth of understanding of issues and events of significance rather than trivia. यानी छोटी छोटी चीजें आपसे नहीं पूछी जाएंगी कि लेट अस से सन इन द ईयर 2016 who won Wimbledon. Nobody needs to know that. For example, and this is example is not given there, in COVID-19 issue, the coronavirus issue, you should also know the stages of viral transmission. What is the first stage, the second stage, third stage, fourth stage? What is community transmission? And what is flatten the curve, how the curve is flattening. Healthcare models, for example, what sort of healthcare models are being followed in India, in USA, let us say in Europe, in for example Germany, in UK. You should know that these have been covered extensively in newspapers. And if I have told you not to read newspapers, you can read compilations. These will be covered even in compilations. I'll cover it in our compilation. Now, medicines prescribed. For example, you must have heard that certain malaria medicines may work against coronavirus. This is a developing situation. So बहुत सारी ऐसी चीजें आएंगी जिनको आपको ध्यान में रखना है. टेस्टिंग मेथड्स कि फॉर एग्जांपल वो टेस्टिंग के लिए सैंपल कहाँ से लेते हैं, कि आपके स्किन से लेते हैं, ब्लड से लेते हैं, चीक स्वाब लेते हैं, क्या लेते हैं, उस तरह की चीजें आपको पता होनी चाहिए. कौन सी कंपनी टेस्टिंग की किट्स बना रही है इंडिया में, ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए. सो दैट विल शो योर डेप्थ ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ इश्यूज रादर देन ट्रिवियल नॉलेज. फॉर एग्जांपल, ट्रिवियल नॉलेज कैन बी वेयर डिड इट स्टार्ट, which city had the highest casualty, which city in US has the highest casualty. Nobody, I mean, you should know that. Maybe they'll ask that, but they claim that they'll ask depth of understanding of issues and events of significance. Okay, next thing, these may test you on historical information related to current events. For example, recent, again this example has not been given there. This is what I have written here for you. Ranjan Gogoi's nomination into RS, you all have followed that news, so you should know the past examples when Supreme Court retired judges were nominated in the Rajya Sabha, or Supreme Chief Justice of India, when he retires, what offices can he accept, or judges of Supreme Court, what offices can they expect accept. For example, you must know NHRC, National Human National Human Rights Commission. So this is something जो उसका chief होगा, that will always be somebody who will be a retired Supreme Court judge. So similarly, there are many such bodies. You should know that. Past examples, when CGIs have been governor, for example. So you should know that. Again, in context of COVID-19,
You should know Spanish flu. It, almost a century ago, this flu happened, and it happened even in India. Plague happened in India. So all these things have been covered in the newspapers, will be covered in the compilations. Read about that. Don't think these are boring things. You don't need to read it. Okay? आपको पढ़ना है उसके बारे में. Now, the official advice of the Consortium for Current Affairs is make sure you read the entire passage before you attempt the questions. I would, however, suggest the reverse. I have, told that in the class also कि आपको उल्टा करना है. आपको पहले क्वेश्चंस पढ़ने हैं, क्योंकि कई सारी जगहों पे क्वेश्चन पढ़ के आप पैसेज पढ़ने की जरूरत ही महसूस नहीं होगी. ऑलमोस्ट 40 to 50% ऑफ क्वेश्चंस यू विल सी कि आपको पैसेज पढ़ने की जरूरत ही नहीं है. तो क्यों पढ़ने की, मतलब क्यों पढ़ना है पैसेज? टाइम नहीं वेस्ट करना. टाइम इज ऑफ एसेंस. टाइम उस जगह पे लगाइए, उस सेक्शन में लगाइए जिसमें आप वीक हैं. फॉर एग्जांपल, यूज योर टाइम वाइजली इन लीगल सेक्शन, इन मैथमेटिक्स और सम अदर सेक्शन. ओके, नेक्स्ट, in the current section you will not be asked definitely the vocabulary, right? But they may ask you the meaning of certain statements made in the passage, for example. And this is something like you should know the background of things. When you are talking about cyclones, they may ask you, and this is again provided by the CLAT Consortium, a difference between cyclone, typhoon and hurricane. So keep your static material ready, revise your static material. And especially because you have 21 days time, and it's almost certain that अगर 14 अप्रैल को ये क्वारंटीन खत्म होता है और उसके बाद they have like 25 days. So in 25 days many state boards have not even happened, and they have to manage all the logistics. So from my side I expect it to be postponed. Okay, so you have to keep your static ready and you have to revise, especially now that you have 20 days grace period. Okay, make sure you pay close attention to wording of the questions. For example, they may ask a question in a negative manner. Which of the following is not an example of X? You may miss not, this particular word not, and you'll maybe take the first option because you see this is an example of X. Right? They may use a double negative, although a funny thing, if you read on the LMS, they haven't given, they have left that sentence incomplete. But double negative is something you will see, for example, in this sentence, which of the following is not an inefficient way to do Y? So there is a not and there is inefficient, which is again a negative word. So it basically means which of the following is an efficient way to do Y. राइट. सो डबल नेगेटिव का भी ध्यान रखना है, नेगेटिव का भी आपको ध्यान रखना है. प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी, the best way to prepare is to have a long-term habit of reading, but long-term means like more than 1 year. So if you don't have a habit of reading newspapers and periodicals, it will help you कि अगर अभी से कम आप एडिटोरियल या ओपिनियन सेक्शंस, कुछ पुराने ओपिनियन सेक्शंस पढ़ लें. ठीक है. Although I again want to emphasize कि कुछ दिन अभी न्यूज़पेपर ना पढ़े. ठीक है. You can use compilations for that. Now the CLAT Consortium says they do not discourage or encourage reading of compilations. These may be helpful. I am telling you these will be definitely helpful. Okay, so use those monthly compilations to catch up. आपको प्रोवाइड भी किए जा चुके हैं कंपाइलेशंस के पीडीएफ भी आपके पास में होंगे, नहीं तो आपके पास में जो वर्कबुक्स होंगी ऑफलाइन आपको मिली होंगी. ठीक है. तो कंपाइलेशंस आप यूज कीजिए, बट डू नॉट मग अप अ लॉट ऑफ फैक्ट्स. बहुत जनरली यार कंपाइलेशंस डू नॉट हैव दैट मेनी फैक्ट्स, बट बहुत सारे बाकी कंपाइलेशंस में आपको बहुत सारे फैक्ट भी मिलेंगे. ठीक है. जस्ट हैव एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सिचुएशन ऑफ द इश्यू. ज्यादा फैक्ट्स को मगअप करने का फायदा नहीं है. फॉर एग्जांपल बजट आएगा तो बजट में एक एक चीज को मगअप करने का कोई फायदा नहीं कि भाई हेल्थ में कितना एलोकेशन है या आपको एजुकेशन में कितना एलोकेशन है. नोबडी इज गोइंग टू आस्क दैट. ठीक है. या यू विल सी कि एवरी मंथ और 2 months देयर इज अनदर डेटा. जीडीपी इज फॉर दिस मंथ, आईआईपी इज दिस, जीडीपी इज दिस. नो नीड टू मगअप दैट डेटा. उसको आप छोड़ सकते हैं. नाउ ग्रुप डिस्कशन, they have said that you should do group discussion, but I have written here group discussion करो ना,
बिल्कुल मत करो, क्योंकि कोरोना, ठीक है। ग्रुप डिस्कशन आपको नहीं करना है, यू डोंट हैव टू डू ग्रुप डिस्कशन. इफ यू वांट टू हैव सम सॉर्ट ऑफ brief discussion, you can definitely ring me up or message me. Analysis of questions. एक छोटा सा मैंने आप hopefully all of you have seen the sample papers. So there are 7 or 8 questions I think in the current affairs section. LMS पे भी वही क्वेश्चन दिए हुए हैं, उनमें से 2 क्वेश्चन निकाल के दिए हैं और सैंपल पेपर्स में भी ये क्वेश्चन है. तो किस तरीके के क्वेश्चन आए हैं, यू हैव टू सी. फर्स्ट क्वेश्चन यू विल सी इज एन IR पैसेज ऑन चाइना इशू. चाइना में उइगुर इशू क्या चल रहा है, एंड आई हैव टॉट दैट, मैंने ऑफलाइन पढ़ाया हुआ है कि BRI क्या चीज़ है, CPEC क्या चीज़ है, उइगुर्स कौन होते हैं, चाइना में क्या इश्यूज चल रहे हैं, वही सारी चीज़ें वहाँ पे आई हैं और ये मैंने एक साथ ही पढ़ाया हुआ था, ठीक है. वैसे ब्रेक्जिट में आप देखोगे, ब्रेक्जिट में एक थोड़ा सा टेढ़ा क्वेश्चन है, इट्स अ डिफिकल्ट क्वेश्चन. हु इज द यंगेस्ट स्टेट लीडर इन द वर्ल्ड? नाउ दिस इज सॉर्ट ऑफ ट्रिविया, ऑल्दो दे हैव सेड दे विल नॉट आस्क ट्रिविया, दे मे आस्क इट. सो ये आपको मिलेगा कहाँ पे, जब आप न्यूज़पेपर्स पढ़ रहे होगे तो वहां पे कहीं छोटा सा लिखा हुआ होगा, ठीक है. बट आई थिंक overall in 36-37 questions, उसमें से around more than 28-30 questions you will find I have discussed in the class, ठीक है. नेक्स्ट स्पोर्ट्स का पैसेज है, जिसमें कुछ करंट स्पोर्ट्स के बारे में बात की गई थी और कुछ पुरानी बातें भी कर रखी, ठीक है, कि ध्यानचंद के बारे में पूछ लिया है. आई थिंक स्पोर्ट्स डे किस दिन होता है उससे रिलेटेड. इट्स एन इजी क्वेश्चन एक्चुअली, इट्स नॉट अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन. ट्रिपल तलाक इश्यू पे क्वेश्चन पूछा था, वी हैड अ वेरी लाइवली एंड लॉन्ग डिस्कशन ऑन दिस इन द क्लास. सो एंड इजी क्वेश्चन है, सारे के सारे क्वेश्चन ट्रिपल तलाक में इजी हैं, आपको लिखवाए हुए हैं. तो ये किसी भी कंपाइलेशन से आप पढ़ोगे या अपने नोट्स पे पढ़ोगे, आपको तुरंत के तुरंत समझ में आ जाना है. सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन था आर्ट एंड कल्चर का, बिकॉज आई डोंट थिंक एनीबडी वुड हैव कवर्ड इट, एंड इट्स सॉर्ट ऑफ थोड़ा सा आउट ऑफ द ब्लू क्वेश्चन है, आउट ऑफ द वे है. और ये आपको देखने के लिए आई थिंक क्लैट में भी मिलेगा एक आधा क्वेश्चन आपको आर्ट एंड कल्चर का ऐसा. बट इवन देयर एक दो क्वेश्चंस ऐसे हैं दैट यू कैन इजीली अटेम्प्ट. फॉर एग्जाम्पल भारत रत्न पूछा है कि किस आर्टिस्ट को मिला है 2019 में. नाउ वी हैव कवर्ड दैट इन द क्लास, वो आप कर सकते हो, ठीक है. एंड इट्स फ्रॉम रीसेंट करंट अफेयर्स जो हमने लिखा भी है. करतारपुर कॉरिडोर, उसके बारे में बात हो रखी है, काफ़ी सारी पूछा गया है, वहाँ पे कुछ उन्होंने और चीज़ें पूछ ली हैं. एंड फॉर्चुनेटली वी हैड ऑल्सो डिस्कस्ड इट कि खालिस्तान मूवमेंट क्या चीज़ है, जो इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर है उसको क्या बोलते हैं, इंडिया के कितने नेबरिंग कंट्रीज से लैंड बॉर्डर्स हैं, ऑल दैट वी हैव सीन, ठीक है. और ये बहुत इजी चीज़ है. ज्योग्राफी का अगर आप कंपाइलेशन पढ़ोगे, PDF पढ़ोगे या जो भी आपके पास नोट्स है पढ़ोगे, इजीली आपको वो चीज़ें उसमें मिल जाएंगी. ब्रू इशू, जो ब्रू रिफ्यूजीज थे, जो कि आई थिंक आप लोगों ने बीच में पढ़ा होगा, उसके बारे में क्वेश्चन आया था. बट मोर देन ब्रू आई थिंक उसमें अप्सफा के बारे में या किस तरीके से मर्जर हुआ मिजोरम का इंडिया में, उसके बारे में भी बात कर रखी है, ठीक है. सो दिस इज समथिंग दैट यू हैव टू रीड कि त्रिपुरा का कैसे मर्जर हुआ, वो उस समय पे डिस्कस किया गया था, ठीक है. तो वो आप पढ़ोगे तो आपको आ जाएगा. और ये चीज़ आपको अपने नोट्स में भी इनमें से कुछ चीज़ें मिल जाएंगी कि ब्रूज कौन लोग हैं, अप्सफा क्या चीज़ है, वी हैव डिस्कस दैट. साइक्लोन्स, नाउ दिस वाज आल्सो आई थिंक अ वेरी गुड क्वेश्चन, ऑल्दो नॉट वेरी डिफिकल्ट. इसमें शायद एक या दो क्वेश्चन आपको डिफिकल्ट लग सकते हैं. सो साइक्लोन्स की नेमिंग कैसे होती है, उसके बारे में कि किसने ये नाम दिया हुआ था. पुराने साइक्लोन्स जो इंपॉर्टेंट थे, फॉर एग्जांपल सुपर साइक्लोन इन उड़ीसा ऑफ 1999 के बारे में बात की हुई है. साइक्लोन फोनी के बारे में क्वेश्चन था आई थिंक. एंड देन इंडिया के बाहर भी कौन से इंपॉर्टेंट साइक्लोन्स हैं वो आपको पता होना चाहिए. फॉर एग्जांपल अगर कोई बोले हरिकेन कैटरीना, यू शुड नो हरिकेन कैटरीना कब कहाँ पे आया था, ठीक है. कभी कभी कुछ इस तरीके के ट्रिविया क्वेश्चंस भी इन्होंने पूछे हुए हैं सैंपल पेपर में, एंड यू कैन एक्सपेक्ट द सेम इन द एक्चुअल एग्जाम ऑल्सो. नाउ स्पेसिफिक एक्शंस टू बी टेकन, फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपके नोट्स हैं, जो कंपाइलेशंस हैं, जो PDFs हैं, उनको पढ़ो. बट वन थिंग, बहुत ज़्यादा सोर्सेज मत करना.
एक या दो सोर्सेज, मैक्सिमम दो सोर्सेज रखो, बिकॉज दैट विल बी इंपॉर्टेंट व्हेन यू रिवाइज। ठीक है, अभी आप जितनी बार रिवाइज कर सकते हो उतनी बार कर लो, एंड 21 डेज में आई थिंक यू कैन इजीली रिवाइज एटलीस्ट वंस, एंड देन आफ्टर दैट मे बी 2 रिविजन्स मोर। तो 2-3 रिविजन अगर आप कर लेते हो अपने इन नोट्स के, कंपाइलेशंस के, आपको एग्जाम में कम से कम करंट अफेयर्स के सेक्शन में, जीके के सेक्शन में 35-36 क्वेश्चंस में से एटलीस्ट 28-29 मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, एंड दीज आर डैम गुड मार्क्स। एक सजेशन मैं दूंगा, क्योंकि आपके पास बहुत सारा फ्री टाइम है, राज्यसभा टीवी के डिस्कशंस होते हैं, वो आप देख सकते हो। अगर आपको नहीं पता कहाँ मिलेंगे, जस्ट मैसेज मी, आई विल लेट यू नो कि कहाँ पर आपको राज्यसभा टीवी के डिस्कशंस मिल सकते हैं, वो आपको एक लिंक में दे दूंगा। ठीक है, बहुत अच्छे सोर्सेज हैं और बहुत ही इजी वे में ये सारी चीज़ें वहाँ पर आपको कवर्ड मिलेंगी। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट मैंने लिखवाई थी, आपको प्रोवाइड की थी, उसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आपको यहाँ पे मिलेंगे। उस लिस्ट पे फोकस कीजिए, बहुत सारे इश्यूज यहाँ पे पूछे गए हैं, बहुत सारे इश्यूज आपको एक्चुअल एग्जाम में भी देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, लास्टली, डू नॉट पैनिक। पैसेजेस होंगे जिनके बारे में आप ज़्यादा नहीं जानते होंगे, हो सकता है पहला ही क्वेश्चन हो जिसके बारे में आपको ज़्यादा नहीं पता हो, लेकिन वहाँ पर भी आप एक दो क्वेश्चंस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमने देखा था अभी आर्ट एंड कल्चर का जो क्वेश्चन था, उसमें आप कम से कम भूपेन हजारिका वाला क्वेश्चन आराम से कर सकते थे। ठीक है, तो डोंट पैनिक। Thank you for watching this. Take care of yourself in the quarantine and we'll definitely meet again. Please remain in contact with your mentors, जो भी हो आपके, आप मेरे से कांटेक्ट में रह सकते हैं, अपने टीचर्स से कांटेक्ट में रह सकते हैं, बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको लगातार मोटिवेशन मिलता रहे और आप अपनी तैयारी ट्रैक कर पाए कि आप किस तरीके से, कि आप ठीक तैयारी, ठीक रास्ते पे जा रहे हैं, आर यू फॉलोइंग द करेक्ट path or not. Okay, so I'll see you again. Thank you again for watching. Bye bye.